फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो BLF 221 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 11 तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो 12 है रोल ऑफ यूनेस्को इन प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एक्टिविटी ऑफ INIS, प्रोफेशनल एथिक्स, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन एनालाइज सेंटर एंड INFI BNET एंड इट्स सर्विसेज। ये सारे क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है UNESCO। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UNESCO साइंड ऑन 16 नवंबर 1945 केम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 1946 आफ्टर रेक्टिफिकेशन बाय 20 countries including India. Second, UNESCO promotes international cooperation among its 193 member state and 11 associate member is field of education, science, culture and communications. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, क्रिएटिंग रीडिंग हैबिट्स। सेकेंड, सपोर्टिंग बोथ इंडिविजुअल एंड सेल्फ कंडक्टेड एजुकेशन। Third, providing opportunity for personal creating development. Fourth, stimulating the imagination and creativity. Fifth, promoting awareness of cultural heritage. Sixth, providing access to cultural expressions. Seventh, facilitating the development of information and computer literacy skill. तो जो ये ऑब्जेक्टिव है इसको आप थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ द UNESCO स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है इसका, क्या अडॉप्टेड इन 1999। एम है इसका एडवांस द रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन एंड एन्जॉयमेंट। इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। फर्स्ट इज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आर्चीव्स, कम्युनिटी मल्टीमीडिया सेंटर, ई-गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स, पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन, ई-हेरिटेज, डिजिटल हेरिटेज। तो इसकी जो एक्टिविटी है इसको भी थोड़ा थोड़ा आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इट इज़ अ सोसाइटी वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन क्रिएटिंग, गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द टर्म हैज़ कम टू रिप्रेजेंट सोसाइटी एट एन एडवांस पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटराइजेशन, large volume of electronic data transmission and economic profile heavy influenced by the market and employment possibility of information technology. Factor determining the arrival of information society. First, the data explosion, the growing information consciousness and information dependence and society at large, and accelerating development in computing and communication technologies, science-based computerization, management-based computerization, society-based computerization, individual-based computerization.
Different perception of information society. First is technological perception, economic perception, occupational perception, spatial perception, cultural perception. United Nations World Summit on the Information Society alternate definition और proposal. तो इसकी परसेप्शंस को भी आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये है सारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होता है, इसके फैक्टर डिटर्मिनिंग क्या हैं और इसकी परसेप्शंस क्या क्या डिफरेंट. Question number 14. Library consortia. Libraries and publishers coming together for mutual benefit and enabling collaborative acquisition of e-documents to a group of libraries. It started with cooperation when libraries shared books between each other and provided interlibrary loan service wherein a user could issue a book not available with his/her library from some other library. There were problems for library in providing this service due to limited copy of book available. Technology came to the fore in the form of xeroxing. Further development in information communication technology led to the birth of library networks. They were proceed with development in data network that enable libraries to be interconnected. The birth of library networks resulted in organized effort toward resource sharing. Union catalogs were built to provide access across boundaries. Bibliographic access was standardized, also resulting into sharing of intellectual expertise. The latest development in resource sharing in the formation of library consortia. Here library join hand with publisher for rational and economic purchase of periodicals. Now the question number 16 is professional ethics. Every profession establishes a code of conduct to govern ethical behavior within that profession. A profession ethic is considered as an expression of the ethos of an occupation. In other words, it should reflect or be based upon all the basic value associated with the occupation. Objectives. First, provide dedicated service, build up the knowledge base of the profession, maintain neutrality to caste, creed, religions and idealism. Fourth, uphold the six freedom study, thought, speech, press, dissemination of knowledge and instruction. Fifth, voice the conviction relating to library legislation, censorship, etc. Importance. First, guide the profession in decision making in professional work. Second, enhance and validate the information of a profession and professional. Third, help the librarians to project their practices. And fourth, inculcate professional zeal among the members.
Question number 17, knowledge based economy. First, economies which are directly based on production and distribution and use of knowledge and information. Second, knowledge based economy is referred to as the new economy and modern economy. The term knowledge based economy results from a fuller recognition of the role of knowledge and technology in the economic growth. This is the definition. Now the indicator. Knowledge based economy are needed for the following tasks: measuring knowledge inputs, measuring knowledge stock and flows, measuring knowledge output, measuring knowledge network, measuring knowledge and learning. इसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा थोड़ा. डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज: नो व्हाट, नो व्हाई, नो हाउ, नो who. नो व्हाट, नो व्हाई इज़ रीडिंग, नो हाउ, नो who इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सो इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो. Question number 18 is Information Analysis Center. An Information Analysis Center is a formally structured organizational unit specifically established for the purpose of acquiring, selecting, storing, retrieving, evaluating, analyzing, and synthesizing the body of information and or in the clearly defined and specialized field or pertaining to a specified mission with intent of compiling, digesting, repacking and or otherwise organizing and presenting pertinent information or data in a form more authoritative, timely and useful to a society of peers and management. Now the question number 19 is INFLIBNET, INFLIBNET, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क. तो इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क. तो क्या है इसमें? सेटअप बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1991. शॉर्ट में है, थोड़ा आप एलेबोरेट करके लिख सकते हो क्योंकि ये नोट्स से मैंने लिया है. सेकेंड, हेडक्वार्टर आर लोकेटेड एट गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस अहमदाबाद. एलेबोरेट करके आप इसको पूरा लिख सकते हो. ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? promote and establish communication facility. Second, to establish a computer communication network for linking library and information center in libraries. Third, to facilitate academic communication. Fourth, the library with institution library information center. Fifth, to promote R&D. Sixth, to generate revenue by providing service. तो इसको भी आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी. सेकेंड, OJAS, ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम, लाइब्रेरी ऑटोमेशन. फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. फिफ्थ, डाटाबेस बनाना, जैसे कोई क्या क्या बना है. फर्स्ट इज शोध गंगोत्री. एक्सप्लेन कर सकते हो सर्विसेज को. प्रोग्राम्स, फर्स्ट है NLIST, नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटली लिटरेट है. प्रोजेक्ट ई पाठशाला. सेकेंड, UGC ई जर्नल कंसोर्टियम. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है आपको क्योंकि ये नोट्स हैं. तो आप इसको एक्सप्लेन एलेबोरेट अपने आप से खुद कर सकते हो.